Welcome to Nagaland TV. I am Yashira and you're watching Nltv Midday News. First headlines. Konyak Students' Union voiced its resentment over the Higher and Technical Education Department's failure to appoint even a single lecturer at the Government Polytechnic, Abol under Mon district. Manipur Chief Minister N. Biren Singh launched the CM Da High Seat campaign on Tuesday with the aim to establish direct contact with the people of the state and to resolve their grievances. The union government's interlocutor A.K. Mishra and NSCNIM leaders led by Chief Negotiator T.H. Muiva held a marathon meeting in New Delhi to break the stalemate on Tuesday. The President of India on Tuesday appointed Kahito Sema as additional judge of the Guwahati High Court. State Home Department in a memorandum has stated that various representations are being published in the newspapers and in forms of media by various organizations on matters pertaining to the different departments of the state government. Now the news in details. The centre has asked thermal power generators to restart discontinued practice of blending 10% imported coal, citing shortage of domestic coal supply at the same time. It alleged that several states were selling unlocated power from central generating stations on power exchanges at a high price and would be penalized. The Union Power Ministry's warning came without the ministry spokesperson disclosing which states they were. The mandate to use imported coal for blending came 2 days after the coal and power ministers denied any shortage of domestic coal. The power ministry said the revival of the economy had led to an increase in demand and consumption of electricity during August-September period. The share of coal-based generations increased to 66% from 62% in 2019. It further said the coal stock at power plants was fast depleting and currently stood at 7.3 million tons. When the crisis started in August with a coal supply shortage, the Union Power Ministry earlier urged GenSource to consider import of coal. Only state-owned NTPC imported a meager 2 million tons. The State Home Department in a memorandum has stated that various representations are being published in newspapers and in forms of media by various organizations on matters pertaining to the different departments of the state government, and informed all AHODs and HODs to make necessary arrangements to take note of such reports and take prompt steps for getting the matter grievance looked into, and also for suitably replying to persons, organizations concerned, and whereby necessary for issuing press releases without delay with the approval of the competent authority concerned. A copy of action taken report on every such representation coming out in the media may also be provided to the Office of the Home Department Political Branch, addressed to Unchon Bemo, National Carrier Services, Department Secretary, Home Department, whose email ID and contact number are unchumbemo.ncs@government.in and contact number 08974632 008. Konyak Students' Union voiced its resentment over the Higher and Technical Education Department's failure to appoint even a single lecturer at the Government Polytechnic, Aboy under Mon district. KSU in a press statement said that while such institutes in other districts are going in full swing, the classes have not yet started in Aboy. KSU opined that having an institute without lecturer is equal to not having an institute at all. They further stated that administrative inconvenience should not compromise the career of youth and the welfare on the students. KSU urged the concerned department to appoint the
required number of teachers at the earliest. Furthermore, KSU also lamented the absence of some medical officers and health staff even after the concerned authority issued detachment order. KSU further directed all absentee officers and staffs to report within 5 days to their respective posting places. Three unidentified miscreants hijacked an auto rickshaw on Tuesday at around 5:10 to 5:30 p.m. in Dimapur. According to the victim's statement, the miscreants asked him to drop them at Court Junction, but before they reached the destination, the miscreants asked the driver to change the direction to Stadium. On reaching the stadium, the miscreants threatened him with a pistol and hijacked his auto. Furthermore, a group of auto drivers went to the West Police Station at around 11 p.m. and filed an FIR against the miscreants. Notably, police assured to look into the matter. আজি আমি নেতা এইটো আজি ফুজুৰ খবৰ সামদে খবৰ পাইছে কি ইয়াতে আমি নেতা দেখি আছে আমি না ভাই অটো ড্রাইভার একতালা অটো রেল গেট পা মাতিনে তাইকে লই যেছে গৈছে এটো পুলিশ পয়েন্ট এনে অনে আনিনে ইয়াতে ডিমাপুর স্টেডিয়াম দে আছে ইয়াতে আনিনে তাইকে মারিনে তালা মোবাইল গাড়ি হ্যান্ড বি অটো বি লই লিছে গুনে মহাঙ্গে জানাই দিছি ধরন মহান ইতলা কেস সপোর্ট है आज आएना से तो आपको नागामिस आता है सर जी? नागामिस नहीं आता है। नागामिस हिंदी आता है? अच्छा अच्छा अच्छा। तो कहाँ से क्या हुआ वो बता दो हम लोग का व्यूअर्स को। तो पहले रोका ना, रोकने के बाद मेरा फोन लिया। या स्टेडियम में? हाँ स्टेडियम में। कितना बजे था? कितना 5:10 हो रहा था। 5:10 तक हो रहा था। और वही टाइम में मेरा पहले मोबाइल छीना, उसके बाद जो है ना तो लॉक खोल के दिया, तो लॉक खोल के वो तो मोबाइल लेके चला गया तो बच गया 2 आदमी। एक ठो ने मेरा कॉलर पकड़ लिया, उसके बाद जो है ना एक ठो ने मेरा हाथ पकड़ लिया, चाबी छीन रहा था, हाथ मचार रहा था, तो उसमें भी लपड़ थप्पड़ दिया। और उसके बाद जो है ना छोटा वाला पिस्टल था, पिस्टल निकाल लिया, तो हम डर के मारे से हमको चाबी देना पड़ा। अच्छा। और लगभग कितने बजे के आसपास हुआ ये? 5 बजे। 5 बजे। तो सामने कोई भी नहीं था? शाम में वन कोई नहीं था। कितना अंदर ले गया था आपको? अंदर ले गया था, ग्राउंड है ना, ग्राउंड के पीछे में। वो जो नया क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है उसका पीछे? पीछे वो स्टेडियम अभी नया जो बन रहा है उसका पीछे में था, पूरे जंगल में। हाँ। अच्छा। तो कोई भी नहीं था सामने में? कोई नहीं था, तो हम था, वो जो छीनने चोरने वाला था ना वो था। तो कहाँ से बोला कि आपको यहाँ लाया? क्या बोल के यहाँ लाया? तो वो बोला कि हम टीसी कोर्ट जाएगा, तो टीसी कोर्ट तो बोला कि हायर जाएगा, तो हायर तो आया ना थी यहाँ पर, तब बोला कि हम स्टेडियम जाएगा, तो स्टेडियम ले गया, तो गैल रास्ता में लेके रोका के ऐसा काम किया। अच्छा, आप लोग FIR करके रखा हुआ है या कैसा हुआ? कौन सा थाना में FIR करके रखा हुआ? FIR अभी तो नहीं किया है, तो वो गाड़ी का नंबर खाली लिया है। वो बोला नहीं किया अभी तक? नहीं, वो पुलिस स्टेशन गया कि नहीं? गया है, लेकिन वो बोला कि सुबह में आने के लिए। सुबह में आने के लिए? कौन सा थाना था? वेस्ट थाना। ये वाला वेस्ट थाना? PWD वाला। अच्छा। आपको पिता तो मारा, पिता कुछ किया? मारा पिता भी था। कहाँ मारा, कैसे मारा? ये तो मेरा कॉलर पकड़ लिया ऐसे, ये दूसरा आदमी हो जैसे मचार लिया, तो 2-3 थप्पड़ गाल में दिया था। अच्छा। और गोली टान लिया। अच्छा। चलो शुक्रिया आप लोग, आपका टाइम निकाल के हम लोग से बात करने के लिए शुक्रिया। তাই নতুন মানুষ থাকিছে না, তো তাই এখানকে মানুষ চাইকিনে গাড়ি দিব লাগে, তাই বি না জানি কিনে ইনকা হয়েছে। আৰু মই কি ক'ব না, ড্রাইভার তো অলপ মিলাই কিনে ভালেই আছে, অলবি পিস্টন দেখাই কিনে আছে না, তাই ভয় খাই কিনে গাড়ি চাবি দি দিছে তাই এখানকে। আৰু কিমান সালৰ ছোকৰা নিচিনা আছো, কিমান ডাঙৰ হোৱা নিচিনা? তো মইতো ক'ব নাপাৰে না, তাই খানি জানিব কিমান চাল্লা আছে না আছে, আৰু মই কি ক'ব। वो जवान था? वो जवान था, हमसे भी जवान था। अच्छा। कितने उम्र का जैसा? वही 25 या 30 बीच में।
शुक्रिया शुक्रिया तो इचा मैं नेते स्टेडियम बिटोर आहिना से कोते बताई के ताला ऑटो चोर गुनी जैसे को आदो इतु सबले इतु हेरे बैक साइड ते आसे येते वो घुराइन लु यशु को देसी इतु स्टेडियम बैक साइड ते आसे इतु स्टेडियम इचा न तुम बुनाई थे गला बैक साइड ते आसे मानो भी नहीं तो आपका नाम बता दो और यहाँ से जो जो हुआ वो बता दो। मेरा नाम साजन कुमार है। यहाँ पर आने के बाद रुकने के बाद मेरा मोबाइल लिया। पहले मोबाइल लेने के बाद तो बोला लॉक खोल दो भाई, तो लॉक खोल दिया। लॉक खोल के वो जो आदमी मोबाइल लिया वो आदमी चला गया, तो बच गया दो ठो बच गया। एगो पीछे सीट में बैठ के मेरा कॉलर पीछे से पकड़ा हुआ है, एक ठो आगे से मेरा चाबी छीन रहा है, उसमें 2-4 थप्पड़ भी खा लिया। तो उसके बाद पिस्टल निकाला, डरा में था वो क्या कहता है बैग, उससे पिस्टल निकाला। पिस्टल निकालने के बाद मेरा कनपट्टी में सटा दिया, तब जाको मेरा चाबी देना पड़ा। तो अब कितना दिन हो गया नागालैंड में आके? मेरा यहाँ अभी आया हुआ है ना, तो 1.5 महीना हुआ है यहाँ। 1.5 महीना। इससे पहले भी आया था। अच्छा। इससे पहले भी आया था। तो हम लोग का पब्लिक को कुछ बोलने के लिए मन है यहाँ, जो बोलने का आपका सोच विचार जो है अंदर जो है, जो बोलने का मन है वो थोड़ा बता दो। मेरा मन तो उस समय तो अकेला था, तो हम तो सोचा कि मेरा मार देता। अकेला मेरा हिम्मत कम नहीं किया, इसीलिए मेरे को चाबी देना पड़ा। चलो हम लोग ये अभी यही सोचे कि हम लोग का जल्द से जल्द आपका जो हुआ वो मिल जाने के लिए, और आप लोग इतना कोऑपरेट करके हम लोग से बात करने के लिए भी शुक्रिया अदा आपको बोल रहे हैं हम लोग। थैंक यू भाई। तुम तो इचा हमें येते वेस्ट थाना ला बाहर आइना से तो येते हमें ना नागा ब्रदर इकता ताई भी ऐसे गुड समरिटन आने ये तो ओतोला केस ते मतलब दिशे फायर लो पड़े तो ओलब एकता दुईता कथा होते लो किंगा जैसे ना आई दो अमेरिकन दे बुई दाइसे दो उमलगा ड्राइवर ब्रा कॉल आइसे कि ऑटो दे ब्रा तला साथिला दो नागा मानुगन 3 जन छोकरा खान ब्रा गन पॉइंट करेगना मोबाइल वैलेट सब लइगना छिन लरिसे इना खबर ब्रा जाइसे तो इदा ब्रो खान मेडे खान नागालैंड टीवी खान भी पंजिंगना थागिसे एदो ब्रा अमेरिकन इदे आइगना एफआर टच कर दिसे तो पुलिस खान भी पुलिस टीम ब्रा भी तार पारातक मदद करिबो कंट्रोल रूम दिबि सब खबर दिसे गइना मोहनगे जानाय दिसे आरो इनेगा तो नागा मजोरि भी कुन होइले भी इनेगा तो नगुरिले भाल निजोर पेट निमिदे गाड़ी चलाइगेना इना थाका गांगे इना कुरा तो हुनिउलि भी बिसि बिया आसे आरो इनेगा तो आगे दिबि इनेगा नहो निमिदे कोकाई भाई खान सब पाइ दीदी पुइनि खान सब मिलाइगेना इतो बिया खान तो रखाबो लागे टिका खान स्टेडियम भाले डिमापुर स्टेडियम ते जो तादी स्नेच हुइसे गइसे तो इदो हिसाब ते कोनबा दिखिना भी थाकु पारे ना दिखिना थाकु पारे टिका खान भी इनेगा बिया काम ते दो पारादक मदद करिबोले कोशिश करिबि गइना आमी भी कोकाई भाई खान नागा मानु खान के दो चेन्नई दिया से। थैंक यू सर अपना टाइम लेना मैं नागालैंड टीवी के खुदा कोई दे करने। Manipur Chief Minister N. Biren Singh launched the CM the High Sea campaign on Tuesday with the aim to establish direct contact with the people of the state and to resolve their grievances. People of Manipur can dial the helpline number 9534795347 and directly register their problems and share suggestions with the Chief Minister. The campaign aims to address the public grievances and also other social issues of the state. Furthermore, the campaign provides a platform for the people who are frustrated by the local bureaucracy. Singh, while speaking at the occasion, said that it is important to use technology to improve the governance and release the full potential of Manipur, and it is crucial for the people of Manipur to participate and play an important role in the development of the state.
The electrification of Indian Railways Northeast Frontier Railway Zone has been completed successfully from Bihar to Assam. Northeast Frontier Railway Zone announced on Sunday that it had completed the electrification of railway tracks from Katihar, Bihar to Guwahati, Assam. The electrification work will now connect all the major cities of the country with Guwahati on seamless electric traction. According to the Northeast Frontier Railway, it will not only save foreign exchange reserves spent on high-speed diesel oil, but it will also ensure greener transportation and lower carbon footprints. Additionally, Rajdhani Express trains can now be introduced for northeast states like Manipur, Mizoram, Meghalaya, Nagaland and Sikkim. Furthermore, running time between Guwahati to Katihar, Malda town is likely to reduce up to 2 hours as trains can now move at higher speed due to better acceleration and deceleration. The Northeast Frontier Railway Zone has completed electrification work of a total of 649 RKM by 1,294 TKM from Katihar to Guwahati successfully. The Alisal fire continued to wreak havoc on California's central coast, ballooning to more than 13,000 acres by Tuesday night with 5% containment. According to sources, approximately 100 structures were threatened, which includes ranches and homes. Around 600 firefighting personnel were working to contain the blaze. Authorities had already shut down a major thoroughfare and ordered mandatory evacuations as powerful winds swept across the state and fueled the rapidly growing fire that erupted Monday afternoon in Los Padres National Forest. India is projected to retain the tag of fastest growing economy in the world, with International Monetary Fund forecasting 8.5% growth for the year 2022. In its latest economic outlook report, IMF said that Indian economy is expected to grow by 9.5% in 2021 and 8.5% in the next year. The announcement comes as a positive sign for the economic, which is recovering from the slump created by COVID-19 pandemic. In financial year 21, the economy had witnessed a negative growth of 7.3%, first time in almost 40 years. India also witnessed its first technical recession last year with 2 consecutive quarters of negative growth in wake of the nationwide lockdowns to curb the spread of COVID-19 pandemic. A massive fire broke out in around 20 motorcycles parked at a residential society in Nehru Nagar, Mumbai on Wednesday morning. According to reports, the fire started at 5 a.m. today. After getting information about the incident, the fire brigade team reached the spot and tried to control the fire, but the fire was so severe that by the time it was brought under control, all the motorcycles were gutted. The magnitude of the fire can be gauged from the fact that 16 fire tenders were pressed into service to douse it. Further details are awaited. A candidate from Coimbatore has made headlines for getting a single vote in the rural local body elections held in the district on October 9, counting for which is underway in Tamil Nadu. The Karthik, who is a BJP youth wing leader in Coimbatore, contested for the position of ward councillor in the elections held to Periyanalke Palayam Union Kuru Dam Palayam Panchayat Ward number 9. However, he only managed to get 1 vote. According to sources, Karthik's loss was even more embarrassing as he had a total of 5 members in his family, 4 of whom did not vote for him. However, reacting to media, Karthik said that his family's vote was in ward number 4 and therefore they could not vote for him. As the result in the ward were being announced, social media erupted with jokes about Karthik. The single hashtag #VoteBJP started trending on Twitter and has been used in over 12,000 tweets and counting. Poet activist Meena Kandasamy took to Twitter with a screenshot of the election result and captioned, "BJP candidate gets only 1 vote in local body elections," proud of the 4 other voters in his household who decided
to vote for others. State Deputy Secretary of the DMK IT wing, ISAI, tweeted BJP candidate from Coimbatore secured 1 vote in the local body election and his family has 5 votes. That is all for now. Keep watching Nagaland TV for more news and updates.